हाय एवरीवन, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सीक्वल का एक अदर प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन का बात करने वाले हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। सो हियर वी हैव टू राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नंबर ऑफ यूजर्स हु विजिटेड रेगुलरली फॉर 2 कंसेक्यूटिव डेज। ओके, तो मुझे ऐसे यूजर्स निकालने हैं जिन्होंने जो 2 दिन लगातार बैडमिंटन कोर्ट आए। ओके, सो हियर यू कैन सी वी हैव 3 डिफरेंट यूजर्स 1, 2 एंड 3, एंड ये तीनों डिफरेंट यूजर आईडी के लिए यू कैन सी द यूजर 1 हैज विजिटेड द कोर्ट फॉर 1st of the April and 2nd of April. Similarly, the second user has visited the court in 1st of the April, but he skipped the 2nd of April and then visited the court at 3rd of the April. Okay. Similarly, we have another user called 3. So we want to find such user who has visited the court in a 2 consecutive date. So let's see how we are going to achieve that. So here you can see I have the data. So here you can see I have the data, dummy data for the badminton court table, and the data is being loaded into that particular table. Now what I can do, अगर मुझे कहीं से ये पता चल जाए कि द नेक्स्ट डेट, लॉग इन डेट के बाद नेक्स्ट वो पर्टिकुलर प्लेयर कब आया है, अगर मुझे वो पता चल जाए, so we can use that data to filter out our records. Okay, so what we can do, there is a window function called lead, and if I put login date in lead, so basically what it will do, it will fetch the next login date for that particular user and place it in that particular row only. Okay, so over partition by user ID order by login date. Okay, order by login date, partition by user ID and login date. And here you could see that I am getting the login date for that particular next date. Basically क्या हो रहा है, हमें उस पर्टिकुलर यूजर ने नेक्स्ट कब आया है, मुझे उसका आगे का डेट मिल रहा है. ओके, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन नेम इट एज नेक्स्ट login date, or else what we can do, we can use a case statement. एक case statement का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, अपन चेक कर सकते हैं कि ऐसे यूजर्स जिसका नेक्स्ट लॉगिन डेट एंड लॉगिन डेट के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 ही होना चाहिए. बेसिकली आज का डेट और कल के डेट में सिर्फ 1 का डिफरेंस होना चाहिए. सो आई एम यूजिंग अनदर CTE table. CTE, I'm putting this in a CTE table. So I just want to select user ID and I just want to add a case statement. So case statement में we can started using case when login date or else we can do it next login date is equal to login date plus 1. अगर ये बराबर हो, so what we can do, we can flag that as 1. Okay, then 1 or else 0, end as flag. Okay, if I run it, next login date from CT, if I run it, you could see for user ID. Okay, so to make it little more clear, I am just putting it here, login date. Here you can see that login date for user 1, the login date is 1st of April, and after that he logged at 2nd of April. So that is a perfect scenario with what we are searching for. Okay, so we flag that as 1, and after 4 he didn't came, so we are flagging it as 0. What else we can do, we can take another CTE table and write flagged records. Okay, as flagged records, and we are just selecting those. Select start from
flagged records where flag is equal to 1. So if I write it and select those records only whose flag is equal to 1, then I'm just putting some space here. Now you can see that I am getting a user who logged in consecutively for 2 days. Okay, so what we can do, I'm just selecting user ID here. That is what we only want. So this is the perfect solution for this particular query. Okay, hope you like my video.